नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निकलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज बड़ी ही खास ये जो स्ट्रीम है क्योंकि हमारे साथ जुड़ गए हैं, थोड़ी देर में आपके सामने स्क्रीन पर होंगे ग्रैंड मास्टर अर्जुन इरगासी। तो मैं उनको स्क्रीन पर यहाँ पर लेकर के आता हूँ सीधे। अ, अर्जुन, बहुत बहुत स्वागत है हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर। हेलो, नमस्कार। और आपको मेरी आवाज़ आ रही है बराबर? हाँ, आवाज सब ठीक है। और दोस्तों आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों तक जो है हमारी आवाज़ जो है बराबर पहुंच रही है। तो अर्जुन, मैं जानता हूं कि आपका टाइम बड़ा टफ है, बड़ा शेड्यूल जो है वो बड़ा टफ है, बिजी हो आप, बहुत सारे टूर्नामेंट आपको खेल रहे हो, अभी खेल के आए हो स्लोवेनिया से। ये माइक वाइक का सेटअप नया लग रहा है ये। हाँ, ये चैंपियंस चेस टूर के बारे में परचेज किया और अच्छा, चैंपियन चेस टूर के बाद आपने सेटअप किया। मैं मेरे को अभी भी करना है ये। मैं मैं हर बार सोचता हूँ कि मैं माइक ऐसा लगाऊंगा, लेकिन अभी तक वो हुआ नहीं। तो अर्जुन, पहले तो बहुत बहुत आपको बधाई। आपने वो सारे गोल अचीव किए जो हमारा दिल्ली में इंटरव्यू हुआ था, दिल्ली इंटरनेशनल में। वो सारे गोल आपने अचीव किए, तो आपको बधाई, आपके कोच को बधाई, और पूरी टीम जो आपके सारे लोग लगे होंगे, आपके पेरेंट्स, सबको बहुत बहुत बधाई कि वो गोल अचीव हुए। तो मैंने धन्यवाद। आपका इंटरव्यू भी नहीं ले पाया अभी, जब क्या बोलते हैं, ओलंपियाड में अपन ने उस समय बात की थी, बट अलग से इंटरव्यू नहीं ले पाया। तो अर्जुन, सबसे पहली बात तो ये बताओ, 2725 2725 पहुंच गए हो, कैसा लग रहा है? मतलब आपने एक गोल अचीव किया है, क्या बदलाव अर्जुन अपने आप में देखते हो? Yeah, it's a good feeling. So at first my goal was like 2700 since a very long time, but I think it ended up being pressure because I took it too personally and it didn't really happen also. So then for the Olympiad, I just like calmed down. I just wanted to be a team player, didn't really care about the ratings. हम्म। And it went well. Like I crossed 2700. And after that, I played Abu Dhabi. I was just playing freely. I was not thinking so much about the ratings. And it worked out really well. तो चलिए, अर्जुन ने कहा कि उनका गोल पूरा हुआ, जो उन्होंने सोचा था वो सब कुछ पूरा हुआ, और वो कोई बिना प्रेशर के खेल रहे थे इन टूर्नामेंट में जब वो खेल रहे थे। अर्जुन, बीच बीच में हिंदी ट्राई करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? हाँ। जितना भी आए तुमको, कोई चलेगा, सब ठीक है। बिल्कुल, आप ठीक है। इंग्लिश के साथ उसको मिक्स करते रहना, बाकी अगर मैं देख लूँगा, बाकी कुछ रहेगा तो मैं सबटाइटल बाद में लगा दूंगा। ओके। डन है। सो दूसरा मेरा एक सवाल आपसे ये है कि अब अब चूंकि आप एलिट लेवल पे आ गए हैं, ऊपर आ गए हैं, कितना खेलने में आपको बदलाव होगा? क्योंकि अब हर खिलाड़ी आपके साथ और सीरियस होके खेलेगा। तो अपनी तैयारियों को कैसे अब आप चेंज करोगे, या कैसे देख रहे हो कि बस उसी तरीके से खेलते रहना है? May like I'll try to take one step at a time. I do not really try to think too far ahead. So whatever I have in front of me, I would just take take that and try to do well in that. ओके। अर्जुन कह रहे हैं कि वो हर स्टेप को एक बार में ही लेना चाहते हैं, फोकस रखेंगे और जो भी आएगा उसको सामने देखेंगे। अर्जुन, बहुत सारे लोगों के कुछ सवाल थे जो हमने इससे पहले आपसे कभी नहीं पूछे, तो वो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पहला सवाल ये कि आपको चेस किसने सिखाया था, मतलब, और किस एज में आपने शुरू किया था? चेस में 7.5 to 8 years साल में अ, मैं लर्न किया। और so we used to live in Tirupati before I started playing chess, and my teacher over there suggested me to play chess. I mean, she suggested my parents to get me into chess. ओके। So, but it was not possible. But it became possible after we moved to Varangal, and a local coach taught me how to play chess. ओके, तो That's how it began. 7.5 साल की उम्र में आपने चेस सीखा। वो अगर देखें तो आजकल के जो प्लेयर्स खेलते हैं, मतलब जो बच्चे 4-5 साल से शुरू करते हैं, तो एक प्रकार से आपने काफ़ी लेट शुरू किया था ना? हाँ, तो जब काफी आप नहीं फॉर पर एग्जांपल, थोड़ा सा लेट। आप फॉर एग्जांपल 10 साल के रहोगे तब तो निहाल चैंपियन बन गया होगा टूर्नामेंट्स में कुछ, है ना? But I my initial rating was pretty high. Although I started playing at 8, I got 1584, which was like quite high in those times. And I think Nihal got like some 1200 or something. ओके। So I was overrated at 1500, ओके, आपका but स्टार्टिंग yeah, although I रेटिंग started, अच्छा आया, शुरुआत अच्छी हुई आपकी।
Yeah, it was a balanced thing, I think. ओके। अच्छा, अगला एक मेरा सवाल है जो कई लोगों ने लिखा, आपका फेवरेट प्लेयर ऐसा कौन था जब आपने खेलना शुरू किया? तो कौन हीरो था आपके दिमाग में कि मतलब एज अ चेस प्लेयर जब आप आइडियल चुनते तब आपके दिमाग में कौन हीरो था? Yeah, at that point I only knew Anand sir, no one else, ओके। and he was like my hero of chess. ओके, आनंद His जी आपके हीरो ऑफ चेस है और होना भी चाहिए। अच्छा, ये बताओ कि फिर जब आप आनंद जी से पहली बार मिले तो तब क्या हाँ, फीलिंग आई? मतलब ये अपना हीरो है और इनसे हम मिले और आज वो आपकी तारीफ करते हैं। मैं फर्स्ट टाइम इंटरैक्ट किया उसने 2019 में। ओके। ये एक क्रैमनिक कैंप है स्विट्जरलैंड में, सो आई वाज सपोज टू बी देयर, सो वी all the students we just had a quick conversation with Anand sir, like how to make use of the camp, etc. So we had a call and I was one of the participants of that call. I didn't particularly interact as such, but I had a few ये वही words वाला with him. कैंप था क्या, माइक्रोसेंस चेस बेस इंडिया वाला कैंप जो था? Yes, ओके ओके but ओके। I couldn't make it because I had a leg injury at that point, and ओके that's ओके another story. ओके। तो आपने ऑनलाइन ही बात की थी पहली बार उनसे? No, I did not attend the camp. I was supposed to, but I ओके couldn't. ओके। चलिए, तो अर्जुन अभी ये एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि फ़िलहाल तो आनंद जी जो है वो आपके मेंटर भी हैं। आप वाका वाका एकेडमी से भी आप जुड़े हुए हो ना? हाँ, ओके। और इंडियन चेस जो है वो काफ़ी ऊपर जा रहा है। अब मेरा अगला सवाल है ओलंपियाड को लेकर के पर्सनली। आप ओलंपियाड आप पहली बार खेले, भारत के लिए सिल्वर मेडल आपने जीता। कैसा एक्सपीरियंस था आपके लिए ओवरऑल एक टीम में जाके खेलना? और उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि आप टीम चैंपियनशिप में अभी जैसे यहाँ पे यूरोपियन क्लब क्लब भी खेलने वाले हो, अभी आपने स्लोवेनिया में भी टीम चैंपियनशिप खेली। कैसा लगा टीम के अंदर खेल करके? uh, हाँ, so मेरे childhood, like since my childhood, I really like and enjoy team events, and Olympiad in particular, we represent India, and the team spirit was just something else. I was looking forward to it since the teams were announced, since May or something, and like the excitement was just too high. That too, it happened in India. We had a B team, a C team as well. There were like in total 6 Indian teams. It was just a very good feeling, and I started to get slightly nervous as the tournament was going to start. But after the first 3 rounds, I picked up pace and I realized it's just like any other tournament. Although it's a team event and there's team spirit and everything else, essentially you just have to play your own game and you just have to play well. So yeah. तो अर्जुन हम क्या कर रहे हैं, मुझे पता है कि आपके पास टाइम बड़ा लिमिटेड है, तो मैं सीधा आपको आपके कुछ बेस्ट गेम हम देखना चाहते हैं जो कि आपने से आपसे बात हुई थी। तो सबसे पहले मैं गेम जो सिलेक्ट कर रहा हूँ डोमिंगेस पेरेस का। इसके अलावा या कोई और गेम पसंद चुनना चाहोगे आप ओलंपियाड का? कौन सा गेम आपका फेवरेट ओलंपियाड में बोले तो? ओलंपियाड में मेरा गेम पार्ले ग्रास के साथ बहुत अच्छा है. Like I हाँ, like it a वो lot. किस राउंड में था? Round 5. राउंड 5 ना? हाँ, 1 मिनट, तो मैं वो गेम निकालता हूँ और हम आपसे जो है वो गेम सीधा समझने की कोशिश करेंगे। आप वाइट पीसेस से थे ना? आई हाँ गॉट इट। भाई. आई गॉट इट, मिल गया गेम। आप मेरी स्क्रीन पे देख पाओगे है ना? बोर्ड जो है वो मेरी स्क्रीन पर आ जाएगा और आप हाँ जिस भी सर. पोजीशन से कहेंगे हम उस पोजीशन से उस गेम को समझने की कोशिश करेंगे। हम ओपनिंग के साथ. हाँ ठीक, मैं बिल्कुल वहीं पे लगा रहा हूँ। बिल्कुल शुरुआत से, जैसे जहाँ आप बोलोगे वहाँ पे हम गेम को लेके चलेंगे या शुरुआत से भी दिखा सकते हैं पूरा। हाँ. तो दोस्तों देखिए, ये एक बड़ा डिफरेंस होता है एक प्लेयर कैसे सोचता है और हम लोग कैसे सोचते हैं। हम हमेशा गिनते हैं कि डोमिंगेस पेरेज वाला गेम जो है वो हमारे लिए बड़ा खास बन जाता है क्योंकि वो बड़े खिलाड़ी हैं। लेकिन अर्जुन को देखिए, अर्जुन जो है वो बोल रहे हैं कि उनके लिए इम्पॉर्टेंट है ये वाला गेम। और मैं प्लेयर का नाम भी यहाँ पे लगा देता हूँ, आई थिंक वो भी ठीक रहेगा, आप लोग प्लेयर का नाम भी देख पाएंगे। तो 1 मिनट। तो अर्जुन आपने ओलंपियाड में हमने देखा था आपने आपने एक सिस्टमैटिक एक परफॉर्मेंस किया था। कैसा है कि आपके जो अपोनेंट थे वो मतलब आपने वाइट वाइट के. से सारे मैच जीते थे
और ब्लैक से हाँ सारे मैच ड्रॉ किए थे, तो ये कोई प्लान था या ये सिर्फ हो गया? हाँ, पहले से मेरा स्ट्रेटेजी वगैरह तो like to be solid with black and to try as much as possible with white. And okay, in a few games I did get some chances as black as well. For instance, the game against Terzakian, I got slightly better and I was pushing, but it was a very minute advantage and he managed to hold. It wasn't like I was just going for a draw, but I just wanted to be solid with black. ओके ओके, मतलब कोई And ऐसा I thought एग्जैक्ट as प्लान much, नहीं था, बट हो गया ये। हाँ, plan was to stay मतलब slightly ब्लैक से आप solid. चाहते थे कि इक्वल रहे और वाइट से आप जीतने के लिए खेल रहे थे, और वो वर्कआउट कर गया। जरूर। ओके, तो हाँ अर्जुन, हम शुरू कर सकते हैं, बताइए। ठीक है, so ये निम्जो F3 वेरिएशन है। ओके, ये हमने देखा है, आपका ये फेवरेट सा बन गया है, बहुत बार आप इसको खेलते हैं लगातार, है ना? हाँ, ओलंपियाड में 2 बार खेल लिया और it went well. और अबू धाबी में भी So खेला ना आपने एक बार, ये वाला? दुबई में खेला एक। हाँ हाँ, सॉरी, ओके, दुबई में, ओके। हाँ, so this line with d5 a3 take c6. c6 is a bit of an unusual move, but ओके, I did check it, but not so deeply. So okay, it's all pretty forced. d4 f4. Yeah, e5. It goes on. Go on. अर्जुन मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं ना ये हेडफोन लगा लेता हूँ, मुझे आपका आवाज़ थोड़ा सा धीमा आ रहा है, ताकि आप जो वेरिएशन बोलोगे मैं वो बराबर लोगों तक पहुँचा पाऊँ। 1 मिनट। Yeah. हाँ हाँ, बोलिए। Go on. So I think I played c5 at some point. We can go all the way until that point. ओके, या, ओके, हियर, ओके, Yeah. C5, ओके, हाँ। Yeah, so my preparation had ended a bit earlier. It wasn't so deep, but he was quite well prepared and he was just blitzing out his moves until queen c7. So that put me under some pressure, and c5 doesn't seem so logical at first. हम्म, And I thought it's not such a terrible move either. So I thought it's a good way to get him out of his comfort zone, like where he knows stuff, हम्म। and I can slowly try to outplay him. So that's the thought process behind c5. But objectively, it's quite bad. Anyway, so अच्छा, मैं आपसे यहाँ yeah, पे एक सवाल पूछना चाहता था। जब आप बोर्ड पे इस तरह की चाल खेलते हैं, मतलब आपको पता है कि शायद उतना अच्छा चाल नहीं है, बट तो मतलब ये कैलकुलेटेड रिस्क होता है, आपको पता है कि रिस्क है, लेकिन क्या अपोनेंट की एबिलिटी पे खेलते हो आपकी, इसको तो मैं यहाँ पे फंसा सकता हूँ, क्या क्या चलता है मतलब दिमाग में उस समय? it depends on the opponent as well. For instance, if my opponent was, let's say, 2650 or 2700, I think I would have played something safer like rook d1 or rook f1. Objectively, it would have been a better move, but my opponent would have been in preparation. But since I thought I had like pretty good advantage over him just strength wise, I thought I can get him out of theory and try to win from there. Just outplay him. And मतलब कुल मिला के बात ये है कि सामने वाले की क्षमता पे और उसके जो खेलने का तरीका है उसके हिसाब से आप निर्णय लेते हो कि यहाँ पे रिस्क लेना है या नहीं लेना है। yeah, it definitely depends on who my opponent is. ओके ओके, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर। तो C5 उन्होंने खेला बिशप इंटू F3। GF3, knight e5, queen c2, knight g6. So yeah, go on. Bishop. बिशप C4। Yeah, here I हाँ, thought b5 he should have played ओके, हियर। after bishop c4. अच्छा, आफ्टर बिशप C4 यहाँ पे B5। ओके, Yeah, I was quite worried of this move. It's so unpleasant. It's hard to decide where to put the bishop, whether to put it on f1 or on a2. ओके, Because if I put it on f1, it can never go to the a2 to g8 diagonal. ओके, दिस डायगोनल विल And मिस, हाँ। yeah, and vice versa. If I put it on a2, it can never go to the other diagonal. ओके, मतलब कुल मिला के कि इसके बाद आप फंस जाते कि ये बिशप जो है वो सिर्फ एक ही डायगोनल में रह सकता है, या तो यहाँ रहे या इस डायगोनल में रहे। ओके, और I can do n pass, but problem है कि a b6 के
बारे में A5 ओपन, ओके, और फिर ये A5 गेट। यहाँ पे प्रेशर आ रहा है और फिर ये रुक बेटर हो रहा है। ओके, तो उन्होंने यहाँ पे तो रुक के D8 खेल दिया। हाँ, so I played rook D1, rook straight off किया, और I think he wanted to be solid, so he was trying to trade off a lot of pieces and he was trying to make it draw. हम्म, So अपने रुक D2 D2 pressure. एक्सचेंज। हाँ, इधर ओके, ऑब्जेक्टिवली क्वीन D6 बेस्ट मूव था। ओके। प्रॉब्लम है कि after the trade, everything gets traded, like A pawn and D pawn would get traded at some point, and it would most likely have ended in a draw. ओके, So, although I saw Queen D6, I chose not to play it because I wanted to keep some chances. And Bishop F2 मुझे बहुत पसंद है। क्या बात है अर्जुन, आपकी हिंदी अच्छी है यार, आप ट्राई करो। ये practically interesting try था, और it's ambitious as well. So he played H5 to prevent Bishop G3. So I played H4. He cannot go Knight H3 because I can go Bishop G3 anyway. He cannot take because Queen D8 is a mate. और so game में उन्होंने खेला नाइट E6, Knight E, हाँ हाँ, go on. किंग G2 मिला, उन्होंने नाइट F4 So खेला। every move, if you see, I'm trying to get in Bishop G3 and he's trying to prevent that. वो स्टॉप Since रोकने की I played कोशिश कर Bishop रहे हैं, हाँ। F3, no. He played H5, I played H4. He went Knight E6 to stop Bishop G3. I went King G2 to reinforce that threat. So और that's how that. उन्होंने खेला क्वीन E5, एंड नाउ Yeah. फाइनली यहाँ पे आपने डिसाइड किया कि अब जाते हैं एंड गेम में। तो अब हाँ अब क्या डिफरेंस हो चुका है? हाँ, so मेरा पहली इंटेंशन था वो Bishop G3, ओके, but वो मिस्टेक है। I just lose a pawn after Queen C5. अच्छा ओके, अगर यहाँ पे आप क्वीन बिशप G3 खेलें तो क्वीन C5 के बाद सीधा पहुंच Queen जा रहा है। C5, Bishop फिर E6. हम्म, Point था Knight E6 runs into Bishop D6, ओके, हाँ वो तो जा नहीं सकता है। but Queen B5 check is a good move here. 1 मिनट सॉरी, यहाँ पे क्वीन, Queen B5 check. ओके, क्वीन B5 चेक एंड देन आफ्टर E4, Queen B1 check. अगर C4 खेला तो क्वीन हाँ, B1, Queen B1 check क्वीन now. B1 चेक, ओके और उन्होंने Bishop को, he'll take the Bishop next. ओके। So I'm just down a pawn and losing here. So then, since this was not working, I wanted to play Bishop A2 instead of Bishop G3. अच्छा ओके, हियर ओके, यहाँ पे आप हाँ बिशप A2 खेलना चाहते हैं, ठीक है। हाँ, प्रॉब्लम था उन्होंने, like let's say he plays something like King G8, किंग G8, ओके and I'm just left with a lot of weaknesses here. C5 is weak, C3 is weak, A3 is weak, H4 is potentially weak, F3 is also weak. So, ओके, and his knights are pretty strong. So I realized this is quite bad. So I thought I had to just bail out and try to make it draw with Queen D6. ओके। तो यहाँ पे जब आपने क्वीन D6 खेला तो आपके दिमाग में था कि अगर ड्रॉ भी होगा तो चलेगा आप? हाँ, because Okay. I thought I could lose otherwise. ओके, तो आपने यहाँ So पे खेला क्वीन D6, D6 एंड देन ये pawn, B6, उन्होंने बचाया पॉन, एंड नाउ यू प्ले gone. बिशप G3, हाँ, so he yeah, played I'm trying to get in my king with King F2, King E3, while he's trying to reach out to my D6 pawn with King E8, King D7. एक बार रिपीट किया, और इधर मैं रियलाइज कर दिया, if I play like Bishop F1 and then King E3, ओके he'll have to play G5, then I ओके can take FG and push E5. So my E5 and D6 pawns would be very strong, and I would have the bishop pair advantage as well. ओके, सो आपने बिशप F1 खेला, ये किंग D7, नाउ किंग E3, एंड देन अभी उसके बाद G2 का स्क्वायर तो है नहीं, G5 खेलना पड़ा क्योंकि बिशप H3 भी आ रहा है ना। नहीं, knight on F4 is, अच्छा पहले तो नाइट इसको बचाना है, टेक 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 Fg5 एंड देन E5 आ गया, तो ये 2 पॉन मिल गए आपको यहाँ पे। अच्छा हाँ मेरे को याद आ रहा है जब ये आपका मैच चल रहा था, अब मुझे बिल्कुल याद आ गया, हमारी स्ट्रीम पे मैच चल रहा था, तो हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि ड्रॉ जैसा लग रहा है, एंड देन सडनली जब हम आप इस
पोजीशन पे आए तो हमें पता चला कि ये ऑलरेडी मतलब आपका पॉन E5 पे निकल गया था और बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया था इस समय। ओके, तो चलिए अब आज ये गेम आपसे समझ ही लेते हैं। Objectively, with very strong engines, it's still a draw, but almost impossible for humans to find this. Like there was some crazy resource I forgot, but it's still holding. But practically, I think it's very close to lost. कि, दो पान है आपके पास सर, और दो बिशप भी यहाँ पे कमाल करे, तो आपने बिशप All H2 खेला। the light square bishop, once it gets to the C8 to H3 diagonal, it's just game over for him because the pin would be eternal. ओके, यहाँ पे आपने किया B5, इन्होंने किया, And both his knights are parallelized. दोनों नाइट हल नहीं रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल डेफिनेटली। तो आपने किया किंग E4, नाइट D5, और बिशप H3 मिला, नाइट इंटू C3, सो किंग F5। तो ये ऑलरेडी लॉस्ट हो गया था ना यहाँ पे। Although he's up a pawn, I just need to attack his E6 knight and it's game over for him. So नाइट that's D4, very किंग G5, एंड देन बिशप G4, एंड देन बिशप E। तो ये जब इस तरह के मैच अर्जुन होते हैं जहाँ पर मतलब ये मेरे एक नॉर्मल आपसे पूछ रहा हूँ कि एक प्लेयर के तौर पर जब आप टॉप लेवल पे खेल रहे होते हो और इस तरह के मैच होते हैं जब आपको पता है कि अभी मैं ड्रॉ के लिए भी खेल रहा हूँ, देन सडनली वो जो मोमेंट्स ऑफ रियलाइजेशन है कि कब इस गेम में रियलाइज कब हुआ आपको कि नहीं अभी ये चेंज हो गया, बिशप F1 के बाद उसके आसपास। So since the start, I wanted to play for a win, but after he played Queen E5, I realized I could be in danger. So since I realized that, I was fine with it though I went for Queen D6, and again I just made a few natural moves. Then I realized I could actually play on for a win. I'm not forced to take it though. So, and the point, Bishop F1 was the point where I realized I can actually push for a win. दोस्तों ये कमाल की काबिलियत होती है, इसीलिए अर्जुन हो, मुकेश हो, निहाल हो, प्राग हो, ये जो काबिलियत है इन खिलाड़ियों के अंदर कि समय पर रियलाइज कर लेना कि कब आपको गेम जो है गेम की स्थिति बदल रही है, सबसे बड़ा आकलन जिसको हम कहते हैं हिंदी में, वो ज़रूरी है। अर्जुन, अभी आप कुछ दिन बाद आपसे ये सवाल काफ़ी लोग पूछते थे, तो ये सवाल भी आपसे पूछ रहा हूँ, ये ऑनलाइन चेस खेलना और ऑन द बोर्ड खेलना, इसमें कितना आपको बदलाव करना पड़ता है अपने ऊपर, और आपके हिसाब से क्या चेंज है? So if the question is like which one do I like more, or नो आई एम आस्किंग व्हाट इज द डिफरेंस, मीन्स क्योंकि डिफरेंस मतलब ऑनलाइन खेलना और ऑन द बोर्ड खेलना। So one big difference is that online it's mostly rapid and blitz, so you have to be very fast, you have to be very sharp to spot tactics, and whereas over the board, mainly in classical tournaments, like even if you are not very sharp, since there's a lot of time, you can take time and figure things out. That is one big difference in my opinion. And another thing is in online chess, there are all these factors with mouse skills and pre-moves, etc. So it's entirely different, I think. Also, one main thing is in over the board chess, there's a lot of psychology involved since you can see your opponent, his expressions or reactions, whatever. And in online chess, it's hardly there. So yeah, that's a big difference. और अर्जुन को वैसे क्या ज़्यादा पसंद है, मतलब डेफिनेटली आप ऑन द बोर्ड ही चुनोगे बट ऑनलाइन भी आप इंजॉय करते हो? I like online as well since it's rapid and blitz, and I like over the board because just because of the factors that I just mentioned. But my ideal format would be like over the board but rapid and blitz, something like that. ओके, क्या बात है। तो दोस्तों आज आपको ये बड़ा डिफरेंस है, इस पर अलग से मैं एक वीडियो बना के भी डाल दूंगा। और अर्जुन का आवाज़ धीरे नहीं है, हमारा अर्जुन बोलता ही धीरे है तो वो भी मैं अपडेट कर दूंगा जब मैं इस वीडियो को अलग से बना के डालूंगा। अब मैं अर्जुन के सबटाइटल भी लगा दूंगा दोस्तों हिंदी में, ताकि आप अर्जुन की जो बात है उसको और अच्छे से समझ सको। तो दोस्तों अब अर्जुन चलते हैं आपके दूसरे गेम में। अबू धाबी ओपन से कौन सा मैच आप चुनना चाहोगे? अबू धाबी से और मेरा गेम अगेंस्ट वांग हाउस से। वांग हाउस है, ओके, तो सीधा उस मैच में चलते हैं
और जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं अभी ओपन कर लेता हूँ। आप ब्लैक से जीते थे ना वो मैच? हाँ, ब्लैक से हाँ, 1 मिनट। टू एक्सचेंज। आज कुछ तो हो रहा है, आज मेरा सिस्टम पहली बार हैंग सा हो रहा है। तुम्हारे आने से अर्जुन डर गया है मेरा सिस्टम। ओके, यस गेम आ गया, मैं ब्लैक से इसको सेट कर देता हूँ। Yeah, so this one, I think one of the reasons why I won was I had a lot of will to win. So usually, like most players, like let's say you're playing a core 2700 with the black pieces, and including me at several moments, I would have been fine with it though, solid though. But this game, I really wanted to win. I had a lot of will to win. I think that really helped me because in the opening, he played exchange slab. अर्जुन एक मैं बस एक चीज़ के लिए रोकना चाहूँगा, आपको पूछना चाहता हूँ। आप 2700 प्लेयर से, जैसे आपने ओलंपियाड में भी खेला, जीते, कब आपको ये पहली बार लगा था कि मतलब एक रियलाइजेशन होता है ना कि अब तो 2700 के प्लस भी मैं खेल सकता हूँ आराम से, वो कब आपको पहली बार रियलाइज हुआ था? Like that I'm playing over 20 at over 20. I think I realized it during the Olympiad. ओके, Before that, I wasn't so sure. Like my rating was going up slowly, but I wasn't really getting to play any 2700s to really identify if I'm playing at that level or not. But in Olympiad, I got to play against Dominguez, which was a very nice game. So after that, I I started to believe that I'm playing at 2700. ग्रेट ग्रेट अर्जुन, और डेफिनेटली अब तो आपका आने वाले समय में बहुत सारे टूर्नामेंट आपको खेलने वाले। खैर चलिए, अब वापस इस गेम पे आ जाते हैं सीधा, और शुरुआत से करते हैं। तो यहाँ पर शुरुआत हुई, ओके, So this was an exchange slab, स्लाव एक्सचेंज वेरिएशन। and it's very symmetric. It's extremely tough to win as black, but I think, yeah, as I mentioned, my willpower really helped me. So we made a few normal moves. रुक सी 8, यहाँ तो सब बिल्कुल सिमेट्रिकल है, एकदम कॉपी है। हाँ, copy. Bishop e2, and then finally you change the move h6, Yeah. castle, bishop d6, bishop into d6, queen into d6, queen b3, so आपने खेला queen e7, knight e5, castle, f3. Either वो खेला f3. So after this, I realized that now the dynamics of the game have really changed because it's no longer so symmetric. Although the pawn structure is symmetric, his pawn is on f3, which is already an imbalance. And whenever I capture on e5, pawn structure would already change drastically. So I realized that I have, like, there are a lot of imbalances. If you forget the fact that it came from an exchange slab opponent, it's like, otherwise it's very complicated. So here I spent a lot of time and played this move rook b8. Practically, I love this move a lot. Computer doesn't approve it, but nevertheless, I just love this move because the point is, I wanted to take knight e5, Okay, and doing his pawn structure instead of rook b8, okay, or like instead of rook b8. okay, instead of rook b8, okay. Here you want to take directly, okay. Yeah, but the problem is that he just takes d5, knight d7, and I will lose the b7 pawn. Yes, okay. So you just want to continue your plan with rook b8, so b7 को बचा के, and then you want to do the same thing. Exactly. And knight a4 is a very natural move. It's very logical as well. So the deep point is that after knight e5, d5, knight d7, rook c7, queen d8, rook b7. And here I have this very nice move, queen a5, Queen which I'm a5. pretty sure was missed by him. So the point is now his a4 knight is loose and he cannot take on d7 because b3 falls. So, and I'm winning the e5 pawn back by force. So he took rook into b8, b8, and he went queen d1. तो ये पूरा कैलकुलेट कर लिया था आपने पहले ही, जब आपने rook b8 खेला तो? Rook b8 खेले क्या?
ओके, सो देन आपको यहाँ पे नाइट इंटू E5 मिल गया। ओके, Yeah, so go on. So the pawn structure has changed, and I knew it can go either way, and black's position is simply more pleasant with the knight on e5 and bishop on f5, so I was pretty optimistic. तो B4 A5 एंड देन क्वीन A7। यहाँ पे भी कुछ हो रहा था ना शायद, क्वीन A3 पे या कुछ, नाइट A6। इधर एक बार रिपीटेशन हाँ, हुआ। रिपीटिशन हुआ था कुछ। हाँ, B5 रुक B8, नाइट A6 रुक A8 और B5। ये 96 के बारे में वो ड्रॉ ऑफर किया, हाँ, but thought I should try to play on for 7, and I changed with rook a8. He played ओह b5. सॉरी सॉरी सॉरी, क्या चेंज हुआ, आगे निकल गया। ओके, देन हेयर इन्होंने E4 किया, D4 Yeah, I F8। think e4 was a bad move. Maybe it's already a tough position, but after e4, the point is that takes, queen d4. So here he missed this point with f5. ओके, नाउ If सब he, सब कुछ if he बच गया takes अब on है। e5, अच्छा, इफ टेक्स ऑन E5 देन दिस yeah, then queen e3 check. क्वीन E3 इज अ चेक एंड He cannot go king h1 because bishop g2 and his queen on e5 would fall. ah okay, and if you And play rook F2 then rook C1 is coming। yeah, rook f2, rook c1, bishop f1. And here I have this move rook takes f1. C1 and then F1 and now rook into F1 na, Yeah, after rook into king takes, I can just give bishop d3 check and F3 check and again just queen mate queen will actually fall। with हाँ, queen. Yeah, so this is when. knight C7 यहाँ So पे knight खेला। c7 was a good move. I cannot take on c7 because of queen d8, and is hitting the e6 pawn. Also, after b6, his knight on c7 would be pretty strong. But I just retreated with my queen, queen E7 B6। and we both had like less than 10 minutes around this point, I think. So it was getting a bit tense. And he had this outside passer, so I had to be quite careful, but at the same time, his king is quite vulnerable without the f pawn. So I knew that I would have some potential attack. I just had to consolidate and I would be able to win. So I was just trying to play like the most natural move, and I was not spending too much time. okay, and here हमने ये गेम पे एनालाइज भी किया था। हम देख रहे थे कि कितनी बार जो है वो क्वीन एक्सचेंज की कोशिश कर रहे थे और आप बार बार क्वीन एक्सचेंज जो है वो डिनाई कर रहे थे। एंड आई थिंक फाइनली आफ्टर क्वीन Yeah, बी। because if I trade off the queens, his pawn on b6 would compensate for the insufficient material. And if I don't trade off the queens, I can put pressure on along the g1 to a7 diagonal basically. ओके, तो So अर्जुन का ये that's it. कहना है कि अगर क्वीन एक्सचेंज कर देते तो उनके पास जो मेटिंग थ्रेड्स है वो निकल जाते। क्वीन से जो प्रेशर आ रहा है जो G7 डायगोनल पे, ये सॉरी G2 A7 A8 डायगोनल पर, वो निकल जाता। इसीलिए अर्जुन ने क्वीन जो है वो बोर्ड पे बनाए रखा। एंड देन लास्ट में फिनिश तो बहुत ही ज़ोरदार हुआ था। अच्छा अर्जुन, ये बताओ, जब ये क्या बोलते हैं, ये बिशप B7 पे आके बैठता है मतलब I just, yeah, I was trying to find some forced wins with the d1, but then I realized there's simply no need. I can simply come back and push e4 and win slowly. हाँ हाँ, तो ये भी एक वो मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन था कि अभी मेटिंग थ्रेड्स नहीं आ रहे हैं तो पोजीशन को स्टेबल करके अपना पॉन पुश करते हैं। Right, right. दोस्तों ये भी बहुत सीखने वाला पॉइंट है, जो भी लोग अगर देख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रियलाइजेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बड़े प्लेयर्स की, जो भी अच्छे खिलाड़ी, उनकी एक सबसे बड़ी खासियत होती है कि परिस्थिति को समझ लेना और उसके बाद अपनी चालों को, अपने प्लान को बदल लेना सही समय रहते। सो ओके, दिस इज़। और उसके बाद ईफान के बाद तो ज़्यादा कुछ गेम में बचा नहीं था और यहाँ पर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। And here it's a double attack. I'm attacking the e8 knight and also threatening to checkmate him on g2. G2 पे भी अटैक है यहाँ पर, और जैसा कि आप देख सकते हो क्योंकि F1 का जो है यहाँ पर बिशप जो है वो पिन है। तो दोस्तों अब आपको बता दें कि अर्जुन को हम बड़े ही कम टाइम के लिए लेके आए क्योंकि उनको कल के राउंड की भी तैयारी करनी है, बहुत कुछ है। तो पहले बात तो थैंक यू अर्जुन, आपके 2 गेम हमने देख लिए।
अब आपसे एक दो इंटरेस्टिंग सवाल है जो हाँ, चैट पे भी आए थे, वो पूछ रहा हूँ। तो sure, आपको sure. सबसे पहले अब ये बताना है कि आपके जो 4 खास दोस्त हैं जो कि आपकी एज ग्रुप के हैं। विचार क्या? गुकेश गुकेश हो गया, हाँ, गुकेश, निहाल, पराग और रौनक। हम्म. आपको इनकी एक एक खासियत बतानी है चेस गेम में, आपके हिसाब से इनकी क्या स्ट्रेंथ है। गुकेश से शुरू Can करते you हैं। translate the question to English? I didn't get Okay, it. I'm saying you have to tell me that what is the strength of these players as a player. How you see? Okay, Ah, what is the strong point of Gukesh? What is the strong point of Prague? Like that. okay, got it. Okay. All right. So with Gukesh, uh, so he has two things mainly. One is off the board. I think off the board he's one of the most dedicated chess players. Like I think if you take amongst the 5 members, from what I know, he is the most dedicated. Like if he decides to work on something, he just does it no matter what. So I think that's a big strength. The determination that he has, it really helps him, and it's very strong. And over the board, it's another thing, and I think his calculation is really good. He calculates a lot of long lines, and also he knows where to go further and where to stop and look for alternatives. So I think these are his main strengths. Okay, Gukesh. Now Prague. Rag, I don't really know so well because I don't know him well in person, but I think looking at his games, perhaps I can say that he he he's good at exploiting his opponent's mistakes. Like for instance, if his opponent's king is weak, he goes for some quick attack or long-term attack. He knows when to go for attack, and maybe this is what I think. I'm not so sure though. Okay. And रौनक से familiar हो आप? रौनक के साथ? Yeah, Raunak I know quite well. So he, when he's in his element, he's really strong. He's an all-rounder, I think. He's very good with initiative, and he can also play the slow positions quite well. So I would say he's more of a rounded player. Okay. And And now, also, okay, okay, big strength of his is opening preparation. His opening preparation is insane. It's very good. okay. It's very mature. And what about Nihal? He in this global championship match against Topalov, he showed excellent prep in the third game. Yeah, yeah. And he won two and a half, Yeah, 0 point, no, and half only. yeah, 2.5 half. It was Yeah, it's incredible. really Beating a incredible. world-class player, a former world champion like that is just so commendable. Okay, so now about Nihal. Yeah, and Mikhal, I think he is extremely good with small advantages. Like a lot of players don't even realize that it's an advantage, but he's very good at sensing that small advantage and making use of it. So he just keeps adding pressure and opponents fumble at some point. So I believe this is his major strength, which helps him a lot. ओके। अर्जुन, एक सवाल आपसे। अभी पिछले कुछ दिनों पहले हमने देखा कि पहले कार्लसन ने टाटा स्टील में आपके बारे में कहा कि उन्हें आपका खेल जो है वो पसंद है और उनके हिसाब से आप जल्दी 2700 पहुंच जाओगे, और वो हो भी गया। फिर टाटा स्टील में आनंद जी ने भी आपके बारे में बात की। फिर अरोनियन आपसे काफ़ी इम्प्रेसिव हैं, उनसे कई बार आपके मैच पड़ चुके हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में करवाना ने भी आपको पिक किया है यंग प्लेयर्स में, आपके बारे में बात की। जब आप ऐसा कुछ सुनते हो तो ये क्या आपको हेल्प करता है और प्रिपरेशन करने में, या मोटिवेट करता है? हाँ, definitely. वो मुझे को like it gives me a lot of confidence because like for instance earlier before Magnus mentioned that I could uh, I would cross 2700 soon. I never even thought of it. But only after he mentioned, it gave me a lot of motivation and confidence. So likewise with Fabi and others as well. When they mentioned that I can do this, I can cross 2800 or something like that, it gives me a lot of motivation to work harder and also
confidence that I can do it at some point. ओके। आपसे मेरा एक सवाल पर्सनल ये है कि आपके पेरेंट्स, हम उनको ज़्यादा जानते नहीं हैं क्योंकि वो ज़्यादा सामने आपके जैसा हमने देखा नहीं बहुत सारे टूर्नामेंट में। उनका क्या रिएक्शन रहता है अभी आपकी जो रिसेंट सक्सेस रही है, वो किस तरह से देखते हैं? और आप पढ़ाई छोड़ चुके हो, क्या स्थिति है पढ़ाई की आपकी अभी? पहले पेरेंट्स के बारे में बता दीजिए। About parents and then studies, right? हाँ, यस। Yeah, so my parents are very supportive, and they actually my father started to follow a lot of chess because I'm into chess, and they support me a lot, but they're very busy with the hospital and their own stuff. So unfortunately, they don't get a lot of time to travel. Yet earlier, my mother used to make time to take me to tournaments, but nowadays she is a lot more busy. But I think I think if I play some tournament, okay, I'll be playing in Tata Steel India, I think this year later, and they'll be there. That's the plan. And regarding my education, yeah, so I used to, so when I was younger, I used to manage both studies You are and still younger, yaar. You are super young. when I used to go to school. But then I realized it's just getting very tough. And my parents initially they wanted me to be more serious about education than chess. But after the point they realized that I'm so totally into chess and I like it a lot. I enjoy it. So they just told me that I can take whatever decision that I would like, but just advise me whatever I take, I shouldn't regret that in the future. And they were supporting, like they were ready to help whatever I do. So अभी आप कॉलेज जा रहे हो, स्टडीज कर रहे हो, या अभी छोड़ दिया पूरे से? Yeah, so I joined data sciences last year, but the thing is, it was too hectic for me to manage chess and that. And I had this one very painful trip, Europe trip in 2021 December. It was so painful, and I was like, okay, screw it. I'm just leaving college, and I'll just focus on chess. And I told my parents. In the start, they were a bit reluctant, but they were always ready to support me. So they said, okay, but give it 100% in chess. ओह माय गॉड! तो ये निश्चित तौर पे उनके लिए आसान नहीं होगा, दोनों डॉक्टर हैं, उनके लिए आसान नहीं होगा कि आप स्टडीज़ जो है वो बोले कि नहीं अभी नहीं करना, मैं चेस कर रहा हूँ। इनक्रेडिबल, थैंक यू सो मच टू आपकी फैमिली को कि इतना आप सपोर्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली। My mother is not a doctor. She is like the administrative of our hospital. ओके, आपके फादर डॉक्टर हैं? Yeah, ओके, neurosurgeon. ओके, बट वो दोनों हॉस्पिटल पे इन्वॉल्व है ना, हॉस्पिटल? My mother administrative वो is the ओके, administrative of our hospital. Yeah. बट उनके लिए डेफिनेटली आसान नहीं होगा कि मतलब आप पढ़ाई छोड़ दो और सिर्फ चेस पे फोकस करो। बट बहुत बहुत हम किस्मत मानते हैं अर्जुन कि आप चेस खेल रहे हैं और भारत की शतरंज को ऊपर लेके जा रहे हैं। आप, आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ बस, आगे वाले कौन से टूर्नामेंट्स आप खेलने वाले हो 2-3 महीने में? हाँ, सो ऑनलाइन में कल मेरा मैच है ग्लोबल चैंपियनशिप पदावी एंड डेविड के साथ। ओके, चैंपियंस चेस टूर है 18th से। ओके, And then over the board I have European Club Cup and perhaps world teams. वर्ल्ड टीम्स, ओके, इन नवंबर ना I शायद? think. Yeah, November. ओके, It just got announced like 2 days ago. ओके। And yeah, I think this is तो वर्ल्ड टीम में तो मुझे लग रहा है टीम भी इस बार पूरी बदल जाएगी अब। yeah. या मेरे ख्याल से आप गुकेश, विदित, हरिकृष्णा एंड देन प्राग, निहाल में से जो भी मतलब ऊपर होगा वो टीम में आएगा। क्या बात है! Yeah. तो चलो वर्ल्ड टीम में गोल्ड जीतेंगे इस बार। ओके, थैंक यू सो मच अर्जुन टाइम निकालने के लिए। मुझे पता है आपका टाइम बहुत कीमती है, और हिंदी के जो दर्शक हैं उनके लिए मैं आपने जो भी बातचीत की है मैं उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करके इनके लिए वीडियोस बना के डाल दूंगा ताकि वो आपको सुन सकें। लोग आपको बहुत प्यार करते हैं अर्जुन, मैं बताना चाहूँगा आपको बहुत प्यार करते हैं। हमारे पास बहुत मैसेजेस आते हैं आपको लेकर के, तो सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद. Thanks a lot for all the support and yeah, sorry for not being able to नहीं, speak in Hindi. आप आते रहना, आप हिंदी बोलो, आनंद जी भी बोलने लगे,
आपको भी धीरे धीरे जो है हम हिंदी जो है इसमें एक्सपर्ट करना है हमें, ठीक है। थैंक यू अर्जुन, थैंक यू सो मच, थैंक यू ओके, जनता सो धन्यवाद। मच, थैंक यू सो मच। और फिर मिलेंगे किसी और हस्ती के साथ। और यहाँ पर अर्जुन को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक